का फायदा हो सकता है। ठीक है रवि, आपसे लगातार और जानकारी जुटाएंगे। इस बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। दो तीन चीजें हैं। पूरा देश जानता है कि सेकेंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकेंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा और आपको, पूरे देश को सेकेंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। अंग्रेजी में बोल देता हूं, द पर्पस ऑफ दिस व्हाइट पेपर is not to finger point at the government. The purpose of this white paper is to help the nation prepare for the third wave that is going to come. It is pretty clear that the management of the first wave and the management of the second wave was disastrous. There were some central reasons as to why it was disastrous. We have tried to point out those reasons in our white paper. This is a blueprint on how to react to the third wave which is going to come. It is our intention to provide the government with information and insights on what went wrong. It is pretty clear that the third wave is coming. And I would even go so far to say that you might even have waves after the third wave, because this virus is continuously mutating and changing form, as I said in my last press conference, and as I've been saying from the beginning. So it is important that the government prepares itself for what is going to come. What does it mean to prepare itself? It means have the infrastructure ready, which was not ready in the first and second wave. It means have the oxygen supply that will be required ready. It means have the medicines required ready. The central pillar of fighting COVID is vaccination. And I will have comments to make when you ask me questions on vaccination strategy, but it is very important that we aggressively do vaccinations and cross this bridge of 100% vaccination as soon as possible, because that is the only protection. So I now welcome your questions. Thank you, sir. Before we take questions, sir, we will also like to know from you, maybe hear from you, sir, very briefly, as to where lies the future, sir, and what steps really the government of India take to ameliorate the existing pain. And then, sir, we'll take questions. We have had this white paper is a discussion that has taken place within the Congress structure. And we've had discussions with the experts, and we have basically developed 4 pillars. One pillar, of course, is the idea of understanding exactly what went wrong, which is the foundation of the white paper. And our suggestion there is to have a commission that looks into some of the shortcomings so we can correct them. Second pillar
as I've already said, is preparation for the third wave, which includes developing the critical infrastructure, which includes oxygen, which includes these other elements. Third pillar, again, that we've been repeating again and again and again, is the idea of an economic assistance package. COVID is not just a biological phenomenon. It is also an economic and social phenomenon. And that is why we have to make sure that the poorest people, the weakest people, small and medium businesses are provided the support that they need to get through it. And the fourth and final element is a COVID compensation fund, where we give money to people who have lost loved ones, where we commit to them support of the Indian nation and say that, look, we stand with you in this difficult time. रणदीप जी, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं. व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है. हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले. पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले. जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए, और बिना कोई कारण डेथ ना हो. जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो. दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है. और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है. हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है. अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं. और Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.